हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नवीद शाह और मेरे साथ हैं और आप देख रहे हैं बीफीएम रिएक्ट। आज जो है हम एक बहुत ही कमाल की वीडियो हम आप लेकर आए हैं और उसको हम वीडियो देखने जा रहे हैं जी, जिसका टाइटल है इंडियाज इकोनॉमी द जर्नी टू सुपर पावर स्टेटस। अब इंडिया की इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रो कर रही है तो साइलेंट सुपर पावर। बिल्कुल जी, और जिस तरह से जो है वो इस जो दुनिया के एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं, इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि ये अब 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो बनने जा रही है। तो कोई कहीं पर कोई शक शुबे की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जी, और इसका टोटल जो है जो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब ये स्टार्ट लिया इन्होंने कि किस तरह से इनकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हुई, ठीक है, तो वो एक कंप्लीट इस वीडियो के अंदर एक पैक बताया गया है कि किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एक चेंज आया और अब जो है इंडिया की इकोनॉमी इस तरह से ग्रो करी है कि पूरी दुनिया अब इसकी तरफ नज़र दौड़ा रही है। और लोग जो है मतलब डिफरेंट कंट्रीज जो है अब जोक दर जोक इंडिया के अंदर टूर कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली इटालियन के देखा, जर्मन भी आए, तो वो अब अपना जो है इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट डीलिंग्स भी हो रही हैं। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कुछ अपने रिव्यूज भी देंगे। While it's always been known to be geographically and economically important, this large South Asian nation has silently been transforming over the last several years to take on a superpower role in the global stage. In today's video, we discuss how India has transformed over the last several years and the current makeup of its economy and how it's transitioned itself to become a superpower on the world stage. Officially known as the Republic of India, India is the world's largest democracy, the second most populous nation in the world, and the seventh largest country by area. It dominates South Asia. It's strategically located along multiple trade routes. It's near other major global players, including China, Indonesia, Saudi Arabia, Iran, Pakistan, and many others. The nation declared independence in 1947 and became a republic in 1950. So let's find out just what India is all about. Administered as a federal republic, India includes 28 states and 8 territories, for a total of 1.4 billion people as of 2021. While India did have quite a robust growth rate in terms of population, this has recently started to slow, starting in about 2000, where the birth rate started to decline and we saw higher increases in the proportion of population that was above the age of 15. India is also quite religiously diverse, including major sects of Hindu, Muslim, Christian, and other faiths, according to Pew Research. Historically, India does have a caste system, which has slowly been waning in influence and popularity over time. Economically speaking, in terms of GDP, the most widely used measure of economic output, India totaled $3.1 trillion US dollars in 2021, making it the fifth largest economy in the world by GDP. Historically speaking, India did exceed world growth rate in GDP, and it was hard hit by the COVID-19 pandemic. However, it is expected to recover and outpace the world average once again in terms of this growth. However, India does lag the world in terms of GDP PPP, indicating that while it does have a large economy, the purchasing power, adjusted for prices in India, isn't quite as well off or wealthy as some other nations. This is largely due to India's large population and relatively high poverty rate compared to the Western world anyways. In 2011, it was estimated to be 21.9% according to the World Bank. Currently, it's estimated to be around 16%. India has made tremendous strides over the last several years to reduce that poverty rate, and continuing on this pattern will help close that gap in PPP. Trade is one of the first areas where it's clear to see how India has positioned itself to become a superpower on the world stage. First, India has shown a growing GDP, yet relatively stable import and export numbers, indicating that there has been continued efficiency in the market. India has also shown that it is using resources internally and driving consumer work on the inside of the economy to drive itself, meaning a slight transition towards the way the economies of the United States and Western Europe are set up, which gives India the power to grow from within without relying on the outside world. Additionally, India is a net agricultural exporter, meaning that it exports more food than it imports, and it is known to be food sufficient. It is in close proximity to net importers and showing increasing efficiency in the agricultural sector. All this goes to mean that India is about to develop a lot of soft power
speaking politically, as it now controls food supply to many neighboring nations. This power cannot be understated, as the recent conflict in Ukraine has shown just how vital food supplies are to the world economy. In the last several years, foreign direct investment within India has grown substantially. In 2021, India took in $44 billion of investments from outside countries. India did also invest $17 billion outside of the country. Continued large foreign investments in India in manufacturing and services have the potential to continue moving India's economy forward while also making other countries reliant and dependent upon Indian manufacturing and services. While the country is known to have a somewhat tricky legal landscape when it comes to regulations and business, it has made changes to make it much easier for foreign firms in the last several years. Outsiders see large growth potential in India based on these numbers, and as such, India continues to position itself to grow and become more intertwined in the global fabric. In terms of national stock market returns, India has shown very strong returns, which generally outpace the US in terms of return. It is seen as an emerging market, and tying in with FDI is seen as a great place to invest for outside investors. Company market cap in India continues to rise, as well as the overall number of public companies is growing. Now, returns on the Indian stock market are somewhat more volatile than perhaps the United States market is. However, investors still clearly see a reason to flock to India in droves, and they're not wrong based on these strong returns. If India continues to produce these results, it will continue to draw in more power and financial say in the world that's going on around it. One of the easiest ways to see India's transition over the last several years is within the employment by sector. तो ये बेसिकली उसने कुछ फैक्टर्स इकट्ठे किए हुए हैं जिसकी बिना पर बता रहा है कि किस तरह से एक जर्नी हो रही है इंडिया की सुपर पावर बनने के अंदर। अब उसमें कुछ फैक्टर्स जो है इसने बताए और कुछ फैक्टर्स हम खुद भी जानते हैं, क्योंकि हम रिसेंटली बहुत ज़्यादा वीडियोस पे इनके मेगा प्रोजेक्ट्स पे रिएक्ट कर चुके हैं। इनका जो मेजर जो हमारे पास अगर देखें तो टेक्नोलॉजी इनकी बहुत एडवांस हो चुकी है, आईटी सेक्टर इनका बड़ा एडवांस हो चुका है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर लिटरेसी रेट इनका देखा जाए, एग्रीकल्चर हम इनका देख लें, उसके बाद यूथ पॉपुलेशन इनकी देखी जाए तो वो 65% हो चुकी है। उसके साथ साथ जो इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या मेडिकल के अंदर जो इनकी इन्वेंशंस हैं वो बहुत कमाल की हैं। अब दुनिया के अंदर से लोग जो है वो इंडिया के अंदर सर्जरी करवाने जाते हैं और डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट हो रहा होता है। पाकिस्तान से भी कई लोग जो है वो इंडिया के अंदर सर्जरी करवाने जाते हैं इसी तरह से। तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इंडिया ने सिर्फ एक सेक्टर के अंदर तरक्की नहीं की बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर तरक्की की। दूसरी बात यहाँ पर वो कह रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाले कि मतलब सुपर पावर बनने जा रहा है, उसने बिल्कुल फैक्ट्स को बर्बाद किया, ऐसे उसने अपनी तरफ से ये बातें छोड़ी नहीं है। तो उसने फैक्ट्स बयान किए हैं कि इन वजूहात की वजह से ये जो है आगे आपको 2030 में जो है ये बनता हुआ नजर आ रहा है। यूएस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इस चीज़ से कि अब इंडिया जो है अब, क्योंकि रिसेंटली हमने एक और भी देखा कि इंडिया अब अपने मतलब करेंसी के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। तो जब इंडिया जैसे चाइना अपनी करेंसी के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, इसी तरह से इंडिया भी अब डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जैसे हो गया हमारे पास फ्रांस के साथ भी इनका, रशिया के साथ अब ये वायदा हुआ है कि अब वो अब एक दूसरे की, सिंगापुर के साथ भी इनका जो है ना मुआहदा हुआ है कि अब जो है ये अपनी करेंसी के अंदर जो है वो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो सऊदी अरब के साथ भी इनकी बातचीत हो रही है। अब सऊदी अरब के साथ भी शायद ये जो है इनके बहुत अच्छे गहरे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ, बहरीन के साथ। तो मशरिक़ वस्ता के अंदर मतलब मिडल ईस्ट के अंदर भी इनका काफ़ी ज़्यादा असर है। सो होप सो कि ये लग रहा है कि 2030 तक या 2035 तक जो है इंडिया सुपर पावर की पोजीशन तक आ जाएगा। उनका मेन कंपटीटर इस वक्त जो है वो चाइना है। यूएस अपने अभी प्रॉब्लम्स के अंदर है और यूएस की हालात जो है ना, दो कंपटीटर हमें दुनिया में अब नज़र आ रहे हैं। पहला हमारे पास नज़र आ रहा है चाइना और दूसरा आ रहा है इंडिया। तो देखते हैं जी फ्यूचर में क्या होता है। आप अपनी राय का ज़ाती कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।